Yes, so welcome everyone on the second day of the phonics webinar. Yesterday we have understood about what is phonics. We have understood and the introduction of phonics, right? हमने कल phonics का introduction समझा था कि phonics क्या होता है, phonics क्यों सीखना होता है और किस प्रकार phonics को हम पढ़ा सकते हैं, right? But today we are going to learn more about how we are teaching all the 42 sounds. So yesterday I have given you the 42 sounds. So sorry, it pricked by mistake. So do you all remember the 42 sounds? The page which I have given you yesterday to write all the 7 groups. ये आप लोगों को कल दिया गया था 7 ग्रुप्स लिखने. I would request अर्चना सिंह kindly mute your device. अर्चना, कशिश and all others who have unmuted, please mute so that I am audible to you clearly. Fine. Mute कर लीजिए. Fine. Okay. So if you all are in mute, then you will be able to hear me clearly. अगर आप सभी mute होंगे तो मेरी आवाज़ आपको clear जाएगी. Yes. So now we are learning about phonics 7 groups. Okay? जो आप लोगों ने कल लिखा था कि नहीं? Yes. बोलो. Yes. Good. So we are going to see these 7 groups one by one. तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट ग्रुप में. अब मैंने आपको कल बताया था कि हम इसे कैसे सीखेंगे. मतलब इसके हमने आपको बताए थे 4 चीज़ों पर हम फोकस करने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज द स्टोरी, द एक्शन, द राइम दैट इज कॉल्ड एज अ जिंगल एंड द साउंड. ये 4 चीज़ें हम हर एक साउंड का देखेंगे. फॉर एवरी साउंड वी आर गोइंग टू सी दीज 4 थिंग्स. सो इन द फर्स्ट ग्रुप व्हाट आर द लेटर्स? SATIPN. टुडे विल बी कंप्लीटिंग मिनिमम ऑफ 3 ग्रुप्स. 3 ग्रुप्स हम पहले आज कंप्लीट कर लेंगे. कल ग्रुप 4 and 5. ओके, एंड सी वॉवल रूल्स. ओके, tomorrow and then day after tomorrow 6 and 7. Then our webinar will be completed and then I will be introducing you to the practical which has to be done. Okay, so group 1, what are the letters of group 1? SATIPN. Fine. So coming towards the story of letter S, which is the first letter? The first letter is S. Okay, so what is the story of first letter S? The story is, इसका story बनता है कि there is a girl who is playing with a ball in a garden and there are long grasses in the garden. लंबी घासें हैं और वहाँ पर बच्ची खेल रही है. Spontaneously one snake comes and hisses. So the girl is very much afraid and then she runs and moves towards the parents and then she says, snake is in the grass. Snake is in the grass. Snake is in the grass. So this is the jingle. And what is the sound? This is the sound for letter S. Okay, and what is the action? Jingle I'll be explaining you all together. ये पूरे 6 साउंड के जिंगल सब एक साथ बताऊंगी आपको. ठीक है, wait, I'll just add on that jingle as well.
So for letter A, the story is the girl is have gone to the picnic. Okay, the girl has gone to the picnic and she has got lots of sweets. Okay, and when she opens all the sweets, the jelly, the jam, and the sweets, so what is coming over there? The ants. So ants has just crawled over her hands. चींटियाँ आ गई हैं और चींटियाँ उसके हाथ पर ऐसे चढ़ गई हैं. So as the ants have crawled over her hand, she is just removing the ants from her hands like this, and then she is saying eh, 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 eh. So this is the sound and the action. Ants on my arms, ants on my arms, they're causing me alarm. So for letter T, the story is two children are playing tennis game. So when they are playing tennis game, one of the boy from the audience who is disabled is just watching this game. So he is not able to move there. So as he is watching this game, when the ball moves this side, he sees this side, and the ball moves this side, moves this side. So what is the jingle? When I watch the tennis game, ch, 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 ch. When I watch the tennis game, my head goes back and forth. So this is the rhyme and the sound is ch. Listen to the jingle. When I watch the tennis game, Ch, 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 ch. when I watch the tennis game, my head goes back and forth. Okay. Now the next letter is I. For letter I, the story is there is one mouse which is a white colored mouse, and that white color mouse is moving over the table, and there lots of stationery has been kept on the table. So there is one ink pot. So when the mouse is moving over the stationery table, the ink pot just spills. And as the ink pot spills, the white color mouse is now a blue colored mouse. So this is the whole incident when boy is watching. So what is the boy doing? The boy is making a mimicry to the parents, and then the boy is saying, Inky the mouse is my pet. She spilled the ink and got wet. The ink is spread all over the desk. Ink is wet. Let's listen to the jingle. Inky the mouse is my pet. She spilled the ink and got wet. The ink is spread all over the desk. Ink is wet. Next letter is P. For letter P, the story is there is a birthday party going on. And in that birthday party, the boy whose birthday is there, he has got a pink color, pig shaped cake. And as he has got a pink color, pig shaped cake, the children, they are just waiting for the birthday boy to blow out the candles. And there is one phrase in English language for blowing up the candles, to puff out the candles. We also say that puff out the candles. So what are the children saying? Puff out the candles on the big pink cake. Puff out the candles on the pink cake. What you have to do? You have to close your lips, and then you have to take the sound like this. This is the actual sound for P. See, whenever you say some word with P, your lips are getting touched. Like if you say pink, if you say purple, right? Whatever word you are saying with letter P, your lips are just doing like this, how we are doing in the sound. So you have to teach them this type of sound. Okay, ऐसा बच्चों को सिखाना. Okay, listen to the jingle. Puff out the candles on the pink cake. Puff out the candles on the pink cake. Puff, puff. You have to pretend that your this finger is a candle, and you are telling the birthday boy to puff out the candles like this. Okay, now
The last letter is N. For letter N, the story is the children are playing in the garden and spontaneously they have seen one aeroplane flying over the sky. You know, when children see the aeroplane, they are so happy. What are they doing? They are pretending to be an aeroplane. So move your hands like this and you will pretend to be an aeroplane, moving the aeroplane like this. And what is the sound? You have to touch your tongue towards your above jaw. ऊपर के jaw को, ऊपर के तलवे को आपकी ज़बान जो है वो टच होनी चाहिए. Okay? And then say और आपका जो पूरा मुंह है ना वो वाइब्रेट होगा अपने आप, गुदगुदी सी महसूस होगी. हो रहा है ऐसा? This is the actual sound for न. So whatever you are saying with respect to न, like if you are saying noise, देखो noise बोल रहे हो तो आपकी ज़बान ऊपर टच हो रही है ना, राइट? नेफ्यू, नेट, नेस्ट, कुछ भी चीज़ आप एन फॉर बोलोगे तो वो उधर ऊपर आपकी ज़बान जो है वो टच होगी. तो बेसिकली हमें बच्चों को यही चीज़ सिखानी है, राइट? ताकि बच्चे प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करें, प्रॉपर साउंड का उच्चारण करें, तो वो वर्ड्स करेक्ट बोलेंगे, साउंड समझेंगे तो प्रॉपर करेक्टली लिखेंगे भी, राइट? सो लिसन टू द जिंगल फॉर लेटर एन. The aeroplane, hear the aeroplane, Hear the airplane making lots of noise. So here we end up with group 1. Now we are seeing group 2. So for letter C, the story, C and K, the story is different but the sound is same. C और K के लिए story अलग है पर sound same है, ठीक है? So for letter C, the story is there is one Spanish dancer and she is dancing in front of the restaurant, and while she is dancing she is clicking one musical instrument called castanets. So what you have to do, you also have to click the castanets like this. And what is the sound for letter C? K. K. Usually what do we teach to the children for C? C for हम ज़्यादातर हम क्या सिखाते हैं बच्चों को? Cat. That means K sound. So K is the sound. K, K, K. And for letter K also the sound is K. So the sound is same but the jingle and the story is different. For the story of K, the action is like this and the story is the children are playing kites on the terrace and they are flying the kite and then they are saying kites are flying in the sky. K, K. And for clicking the castanets, we are clicking castanets. K, K, K. So both the sounds are same. Okay? Listen to the jingle. We are clicking castanets. We are clicking castanets. We are clicking castanets. Clicking castanets. We are clicking castanets. Kites are flying in the sky. Kites are flying in the sky. Kites are flying in the sky. Flying in the sky. Kites are flying in the sky. Okay. Now the next letter is E. So for letter E, the story is the children are very much hungry and they want to eat some tasty breakfast. So the mother is not having anything. So what the mother has done, the mother is saying that I'll just crack the egg and make an omelette. So she has just kept the pan, and as you all know, when the children are very hungry, they do not wait for anyone. So as the mother is cracking the egg like this, so as she is cracking the egg like this, the children are very happy and then they are saying So this is the sound and the action. Now do not get confused from the sound of letter A and letter E. A और E दोनों के साउंड में कंफ्यूज मत होना.
ए का साउंड होता है ए, देर तक खींचेगा। अब बोलो एप्पल, ए, तो एप्पल आता है। और एग बोलो एग। समझ में आया डिफरेंस? ओके, सो ए साउंड जल्दी खत्म होगा, ए ए ए, और ए देर तक जाएगा, ए ए ए, एंड दिस इज ए ए ए। Okay, so this is the difference. Do mind it, don't get confused, and do not take out the same sound, because if you are doing the mistake, children will already do the mistake. Okay, so it's better you all take care. Okay, come on, listen to the jingle for letter E. Eggs in the pan, eggs in the pan, crack the egg like this. Fine. Now the next letter is H. I hope that I'm not going very fast. Are you all okay with it? Fine. Okay. So for letter H, the story is children are playing in the park, and then they are just doing running, jumping, skipping, hopping. So while they are hopping, they are singing, I like to hop, hop. So when they are hopping, they are just taking a long breath. So while we are taking long breath, what do? We take हाफते हैं ना हम खेलने के बाद बहुत ज़्यादा. So the children are very much tired, and then they are hopping. So when they are hopping, what are they doing? They are keeping their hand like this in front of the mouth, and they are taking off the air. They breathe, they are taking out of, and then they are taking on their hand. अपने हाथ पर अपनी सांसों को feel करना है. Okay, so whenever you say something with related to H, तो अपने आप जैसे आप ह से कुछ भी चीज़ बोलोगे ना, अपने आप आपकी सांसें जो है वो बाहर निकलती है. यू से हॉप, देखो थोड़ी सी ऐसे हाथ रख के बोलो हॉप, अपने आप हवा बाहर आती है. हेन, हेलो, राइट, होता है ना ऐसा. तो दैट मीन्स दीज थिंग्स आर प्रूव्ड. ओके, जो भी साउंड आपको बता रहे हैं ना, ये चीज़ होता है. तो बच्चों को बचपन में यही चीज़, छोटे में यही चीज़ सिखाएंगे, तो आगे इन चीज़ों में भले ध्यान ना दें, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन एट द बेस लेवल दे आर गोइंग टू लर्न. राइट, कम ऑन, लिसन टू द जिंगल फॉर लेटर एच. I like to hop, 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 up and down. I like to hop, 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 all around. I like to hop, 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 up and down. Now the next letter is R. For letter R, the story is there is one puppy, and that puppy is got an old cloth, and that old cloth is called as a rag. So the one whose pet is this puppy, that boy, he has come, and then he says, see my puppy rip the rag. The dog has taken on his mouth, and he wants to pull that rag, but the dog is not giving that rag. So whenever we are snatching something from the mouth of the dog, what does the dog does? वो गुर्राता है ना. कुत्ते के मुंह से कोई भी चीज़ छीनने की कोशिश करो तो वो कैसी आवाज़ निकालेगा. बिल्कुल देगा नहीं उन चीज़ों को. तो इस प्रकार का एक्शन बच्चों को करेंगे. मज़ा आ रहा है कि नहीं? You all are enjoying? Then if you all are enjoying, then how the children are going to be? They are going to enjoy a lot. Then they are not going to sit in one place. When you will say like this, happily they will say, isn't it? So the children are going to enjoy a lot. जब बच्चों के साथ क्लास में करोगे ना, तो फोनिक्स के अलावा कुछ पढ़ाने का मन नहीं करता है. ऐसा लगता है यही पढ़ाओ. Children are also happy, and we are also happy seeing them happy, right? See, so now our next sound is rrr. जैसे मोटरसाइकिल चलती है ना, ऐसी आवाज़ निकालनी. rrr. जब भी आप आर से कोई भी वर्ड बोलो, जैसे रिप, रैग, देखो वाइब्रेट होता है ना आपका माउथ. रैग, रॉकेट, राइट. सो यू आर vibrating your mouth like this. rrr. So this is a long sound. rrr. Listen to the jingle. See
Now the next letter is M. For letter M, the story is the children are very hungry. They have just come from the hostel and they are very much hungry. So as they have come from the hostel, the parents have cooked lots of food for them. So they are very much happy seeing so many yummy meals. So what are they doing? On your stomach, you have to move your hand like this. Okay? And दोनों होठों को बंद करके बोलना है. मतलब यम्मी. जब आप बोलो यम्मी बोलो तो आपके दोनों होठ अंदर होते हैं ना. सो व्हेन यू से मैनी, मील्स, मामा, मामी, मेक, आपके होठ दोनों बंद होता है. राइट. सो दैट इज द proper sound in the pronunciation. Listen to the jingle. Mom and the dad take many meals. The mom and the dad take many meals for their hungry children. So this is the last sound of group 2. For group 2, this is the last sound. Your last sound is letter D. Yes? Any doubts? No. Okay. So for letter D, the story is there is one boy and who has got his old toys. ठीक है. जब बच्चों को अपने पुराने खिलौने मिल जाते हैं ना तो बड़े बड़े पसंद आते हैं उनको. नए खिलौनों को साइड में रख के, अरे ये तो मेरा वो वाला खिलौना है, ये तो मेरा वो वाला खिलौना है, और बड़े खुश होते हैं. सो दिस बॉय इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज ही हैज़ गॉट हिज ओल्ड ड्रम. विद अ ड्रम स्टिक ही इज जस्ट banging the drum like this. Da, 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 da. So this is the action. Da, 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 da. Listen to the jingle. See me play on my drum. Playing drums is lots of fun with a Da, 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 da. See me play upon my drum. So here we end up with group 2. So now we'll give a quick revision from group 1 to group 2. Okay? So only the actions. Fine? Listen. Listen and do the actions along with me. I would request all of you kindly keep your cameras on and along with me please do the actions so that if you are doing somewhere wrong, I am going to correct you. So keep your cameras on and do the actions along with me. From group 1 to group 2, we are going to do the actions only. Okay? Oh, sorry. T. 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 E. E. So here we did SAT, IPN. Now the next group 2. For group 2, the first letter is C. Okay? K. 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 Fly the kite. K. K. A. 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 राइट. इजंट इट ईजी. फिर अभी ग्रुप 3 भी देखते हैं और फिर ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 3 तक फिर से रिवीजन करेंगे. राइट. सो आज हमारा ग्रुप 1 से ग्रुप 3 पूरा हो जाएगा. जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन. So what are the letters sounds for group 3? G O U L F B. So what is the first sound? G. The sound is G. Okay. Ma'am, any question? Deepika ma'am?
Okay. Fine. Okay. So for letter G, the sound is G, and the story is the girl, she has gone to the granny's house, and while she has gone to the granny's house, the granny is busy with a choked sink. नानी के घर गई है और नानी एक सिंक चोक हो गया है और उसमें लगी हुई है, ठीक है. एंड देन व्हाट हैज हैपेंड, शी इज बिजी टेकिंग ऑफ द ड्रेन. The granddaughter, she is asking granny, what are you doing? She says that the sink has got choked and now I'm just taking off the water. The granddaughter, she says, wait, I'll call the plumber. So as she is calling the plumber opens up the choke, and as the plumber opens up the choke, the water is gurgling down like this and moving from the pipe towards downwards and to the septic tank. And then the water is moving like this. How does the water move when it is taken up from the choke? Choke अगर निकल जाता है पानी ड्रेन में से, जैसे ड्रेन आउट होता है तो कैसे निकलता है, ऐसी आवाज़ आती है ना. आप लोगों के भी वॉशिंग सिंक कई बार चोक हुए होंगे. पानी जब निकलता है तो किस तरह की आवाज़ आती है? So that is the sound for letter G. Okay? Listen to the jingle. The water gurgles down the drain. The water gurgles down the drain. The water gurgles down the drain. And now the next letter is O. For letter O, the story is the two children are there. They have got a bunk bed. You know what is bunk bed? It is a 2-tier bed, and one child is sleeping down and one child is sleeping up. Have you seen that cartoon Peppa Pig, if you all have small kids? So it is like a train, and in that the boy, he sleeps down and the girl sleeps up. So this is the same story. The two siblings are there. The boy is sleeping down and the switch of the light is down. Okay, and the light is flashing up. So what is the boy doing? The boy is becoming very naughty, like George and Peppa. Peppa is sleeping up and George is becoming very naughty. He's just switching on the light, switching off the light, switching on the light, switching off the light. So the girl is saying, that means Peppa is saying that now it's dark, the lights go on. Oh, 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 oh. It's time for bed, the lights go off. Oh, 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 oh. Listen to the jingle. Now it's dark, the lights go on. Oh, 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 oh. Come on, Mother. Time for bed, the lights go on. Oh, 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 oh. Now the next letter is letter U. For letter U, the story is, it's a very rainy day, and when it's a very rainy day, the children are not allowed to move in the rain, but the child wants to go inside the rain with carrying an umbrella, but it's very, very stormy rain as well. So what is the umbrella, what happened to the umbrella? Umbrella is just moving upwards. So how is the umbrella moving upwards? Like this. And how do we open the umbrella? Like this. So this is the sound for letter U. U का sound अ आएगा, ठीक है? Up umbrellas. Up umbrellas when it starts to rain. Now the next letter is L. For letter L, the story is, there is a birthday party and the one whose birthday is there, the cake is about to come here in this birthday party. But there are lots of lollipops, there are lots of sweets. So children are just mouth-watering to have a lollipop. So what are they doing? They are just wanting to lick that lollipop. So they are just telling the birthday boy to pretend that this finger is a lollipop and they want to lick it. So what are they doing? They are licking the lollipop, but do not touch your finger to your tongue. Okay? If you will do, child is also going to do the same. Keep it far away and then you will lick. Like this, we lick lollipops
We lick our lollipops. We lick our lollipops. Listen to the jingle. We lick our lollipops. We lick our lollipops. Oh, 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 we lick our lollipops. Now, the next letter is letter F. For letter F, the story is the children have gone in the seashore, and in the seashore there are lots of things behind the shore. Some children are just making a castle in the sand, some children are boating, some children are swimming. Spontaneously, one inflated fish comes out of the beach, out of the shore, from the sea. Okay, समुद्र से जो है एक अचानक से एक मछली बाहर आती है, और उस मछली जो फिन है वो ऊपर से फूटा हुआ है, तो मछली के अंदर से पानी निकल रहा है. ओके, सो व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग टू सेव दैट फिश? दे आर जस्ट स्पॉटिंग दैट फिश लाइक दिस, एंड देन दे आर ब्लोइंग इट, ताकि उसको चोट ना लगे, उसको फूंक मार रहा है. ठीक है, ताकि मछली बच जाए. सो व्हाट आर दे डूइंग? Okay, so this is the action. Listen to the jingle. My friends and I went to the beach with my floating fish. It got a hold, the air came out. Now last letter for group 3. Now for group 3, the last letter is B. For letter B, the story is children are playing in the park and they are playing cricket. And what are the instruments from which we play cricket? Bat and ball. So they are calling their friends to play bat and ball. So they are doing the action. What is the action? They are saying, bring your bat and bring your ball. So you have to pretend both your hands like this, that this is a bat and you are hitting the ball. Bring your bat and bring your ball to the park to play. Listen to the jingle. Bring your bat and bring your ball. Bring your bat and bring your ball to the park to play. So here we finish with group 3. So these are the sounds for group 1, 2 and 3. Quickly we'll revise the actions and the sound from group 1 to group 3. Okay? So please switch your cameras on and do the actions along with me. Keep your devices on mute only, but keep your cameras on. Okay? So that if you're doing somewhere wrong, I'll be able to see you and correct you. So group 1 is over. Now group 2. K, 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 e, e, e. D, 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 d. CKEH RMD. Now group 3, GOU LFB. G, G, A, open the umbrella. B, B, B. Okay? Now, just I'll take your 5 minutes. Come to page where you have written all the 7 groups and 42 sound. Now,
If you have color pencils, then it's okay, and if you don't have, just do 2 different actions in your this one. Just wait, my battery is about to die. Please wait. Yes, I hope I am audible to all of you. What you have to do is, you have to circle down, underline the letters which I am telling you. Underline B. Search where is B in the group. जो ग्रुप्स आपने लिखे हैं उसमें B ढूंढो कहाँ है, उसको अंडरलाइन करो. Then underline C, D, F, G. मिल रहा है ना सभी को? H, K, L, M, N, P, R, S, T. अब आपके ये तीनों ग्रुप में ही आ गए होंगे सारे वर्ड लेटर्स जो मैंने बोले. 4th ग्रुप में एंटर हुए क्या? नहीं, राइट. अब इन तीनों ग्रुप में क्या बचा है बताओ. जो जो बचा है उसको सर्कल लगाओ. जो भी बचा है वो क्या है? What are these? सर्कल जिन्हें लगाया, what are these? A, E, I, O, U. What are these? A, E, I, O, U क्या होता है? Vowels. और अभी जो भी मैंने आपको बताया, these all are consonants. मैंने जो अंडरलाइन करने बोले वो सारे क्या हैं? Consonants. राइट. सो अगर आप 3 ग्रुप तक पढ़ा देते हैं बच्चों को, तो आप बच्चों को वॉवेल और कॉन्सोनेंट के टर्म्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ग्रुप के साउंड तो बता ही दोगे आप, लेटर का साउंड भी बता दोगे, स्टोरी एक्शन भी बता दोगे, और आप वॉवेल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो. ए, ई, आई, ओ, यू सिखा सकते हो उन्हें. राइट. बच्चे वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स के बीच में अंतर क्या है वो बता दोगे. राइट. और जितने भी साउंड्स आपको अभी सिखाए हैं, इसमें से रह क्या क्या गया है? कॉन्सोनेंट में से रह गया है जे, रह गया है वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. राइट. और ये वो लेटर्स हैं जिनसे काफ़ी कम वोकैबुलरी इंग्लिश लैंग्वेज में बनती है. डू यू ऑल एग्री विथ मी? इनसे बहुत ही कम वर्ड्स बनते हैं. मैक्सिमम वर्ड्स उन्हीं लेटर्स से बनते हैं जो हम ग्रुप 3 तक सीख चुके हैं. कोई भी वर्ड बनाओगे आप, उसमें यही मैक्सिमम वर्ड्स इन्हीं लेटर्स से बनेंगे. जे फॉर जग, जे फॉर जोकर, ज़्यादातर जे फॉर ये बताएंगे, और उसके बाद बोलूँगी और सोचो जे फॉर, तो आपको सोचना पड़ेगा क्या होगा. और जे फॉर सेम हैपन्स विथ एक्स, सेम हैपन्स विथ वी, डब्ल्यू, वाई एंड जेड. जेड फॉर ज़ीरो, जेड फॉर ज़ीब्रा, जेड फॉर ज़िप, जेड फॉर जिगजैग. बस ये 4 चीज़ें ही सीखी जाती है, उसके बाद तो सोचना पड़ता है. राइट. इजंट इट? लेकिन अगर मैं बोलूँगी जी फॉर, बोलो, अगर मैं आज आपसे बोलती हूँ कि जी से वर्ड्स बना दो, यू कैन मेक मोर देन 25 वर्ड्स विद इन 2 minutes. इजंट इट? लेकिन अगर मैं बोलूँगी जेड से बनाओ वर्ड्स, 2 minutes भी आप लोगों को लगेगा कम है और थोड़े मिलना है. राइट. बिकॉज देर इज़ वेरी लेस वोकैबुलरी. और अगर आपको कल लिखना भी है तो फिर विदाउट द हेल्प ऑफ गूगल यू कैन नॉट राइट. बट दूसरे वर्ड्स के साथ में, दूसरे लेटर्स के साथ में, बिना गूगल की हेल्प के आप सोच के लिख सकते हो. डू यू ऑल एग्री विथ मी? राइट. यू कैन राइट एटलीस्ट मोर देन 15 वर्ड्स. राइट. सो
ये वो लेटर्स हैं जो आप मैक्सिमम बच्चों को वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, कोई भी बच्चा इंग्लिश में बात करेगा तो कब बात करेगा? जब उसके पास वर्ड्स होंगे तभी तो बोलेगा। अगर उसकी मस्तिष्क में कोई वर्ड्स ही नहीं होंगे तो फिर वो मुख पर कैसे लेकर आएगा? तो वर्ड्स बच्चों को मैक्सिमम इंट्रोड्यूस करना है। जैसे हम बच्चे को जब हिंदी में बात करते हैं, मदर टंग में बात करते हैं, हम बच्चे को बोलते हैं बैठने के लिए बैठ जाओ, खड़े होने के लिए खड़े हो जाओ, लेकिन क्या हम उनको ये बोलते हैं? पहले उनको बैठने बोलना है तो हम उनको ऐसे बोलते हैं, ब में ए की मात्रा बै, फिर ठ, फिर ज, ओ। पहले ये बच्चे को सिखाएंगे, फिर बैठना सिखाएंगे और फिर बोलेंगे बैठ जाओ? नहीं ना। अगर हम हमारी मदर टंग में बच्चे को अगर सिखाते हैं बैठना, तो क्या एक छोटी सी चीज़ से हम सिखाते हैं, ऐसा बोल दिया अपने आप बच्चे को पता है मुझे बैठना है, और ये एक्शन करते वक्त आप क्या बोलते हो? बैठ जाओ। और आप दिन में कई बार अगर इस चीज़ को बोलोगे, फिर आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, यू विल डू द एक्शन एंड द चाइल्ड विल सिट। आपने क्या किया? ना बच्चे को कोई ग्रामर सिखाया, ना कोई रूल सिखाया, ना कुछ सिखाया है, सीधा आपने बच्चे के दिमाग में एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है विद दैट एक्शन, और वो वर्ड बच्चे को याद हो गया है कि व्हेनेवर। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ऐसे बोलती हूँ, अगर किसी ने आपको ऐसा बोला, आप क्या करोगे? पानी ला के दोगे ना। तो इस एक्शन से आपको समझ में आ गया कि नीड ऑफ वाटर, ठीक है। सो बच्चे को अगर आप सिखाओगे ड्रिंक वाटर, पानी पी लो, अगर आप बच्चे को ऐसे बोलोगे पानी पी लो, तो पानी पी लो ये जो वर्ड आप सिखा रहे हो, तो उसके लिए कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस नहीं सिखा रहे हो। यू आर जस्ट इंसर्टिंग दोज वर्ड्स इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड विथ एक्शन, राइट? दैट ओनली यू हैव टू डू व्हेन द चाइल्ड इज स्मॉल। जब बच्चा छोटा है तब आपको यही करना है, मैक्सिमम वर्ड्स बच्चों को सिखाने हैं, और तभी हम बच्चों को CVC स्ट्रिंग वर्ड्स सिखाते हैं। कैट, बैट, मैट, रैट, सैट, ऐप फैमिली वर्ड, एड फैमिली वर्ड। जब हम ये पूरे ग्रुप 3 तक सिखा देंगे तो वॉवेल बीच में आ गया, आजू बाजू कॉन्सोनेंट आ गए। अगर आप ए वॉवेल लेते हो, ठीक है, और अगर आप एट फैमिली बनाने वाले तो टी भी हमने सिखा दिया है। अब आप आके कॉन्सोनेंट्स जोड़ते जाओ, मैप, मैच, कैट, बैट, रैट, ये सब इधर डाल दो, और टी यहाँ पर फिक्स है। अब टी भी सिखा दिया, एम भी सिखा दिया, सी भी सिखा दिया, आर भी सिखा दिया, राइट? उसके साउंड भी सिखा दिए। अब बीच में ए रहेगा ही रहेगा क्योंकि ए वॉवेल है। अब CVC वर्ड सिखा रहे हो, राइट? तो आप इस प्रकार से फैमिली वर्ड्स इंट्रोड्यूस करके बहुत सारे वर्ड्स बच्चे के दिमाग में घुसा सकते हो। बहुत सारी वोकैबुलरी अगर बच्चे के दिमाग में आएगी तो केवल उसको सेंटेंस का स्ट्रक्चर आगे की क्लासेस में सीखना पड़ जाएगा। And the child will be a very good and an effective communicator, and child will be able to speak in proper English, right? So phonics की मदद से ये होता है, right? Do you all agree with me? So have you all understood till group 3? And did you all enjoy it? So now you are enjoying, so you have to make your children enjoy. पहले अपने खुद के बच्चों को सिखाइए, पड़ोसी के बच्चों को सिखाइए, क्योंकि आप सब ट्रेनी टीचर्स हैं। फिर बाद में जब जॉब लगेगी तो क्लास के बच्चों को सिखाना, ठीक है? दे आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट, राइट? सो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, एंड प्रैक्टिस विल बी डन ओनली व्हेन यू टीच योर चाइल्ड एंड योर नेबर्स चिल्ड्रन, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज दैट इज फॉर योर लर्निंग, not for earning. And that concept, when you are learning without thinking of anything that you are gaining, you are going to learn more, right? So अगर आपके पास बच्चे अभी नहीं है तो पड़ोसी के बच्चे को बोला आजा मैं तुझे फोनिक्स सिखाती हूँ, ठीक है? और फिर उनको सिखाओ, अपने फ़ोन में दिखाओ सारे वीडियोस। ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। जस्ट राइट जॉली फोनिक्स ग्रुप और ग्रुप का नंबर लिख दीजिए, आपके फ़ोन में खुल जाएंगे ये सारे वीडियोस, ठीक है? So tomorrow we'll be seeing group 4, 5 and the rule of long vowels. Today we have seen the sound of short vowels. So कल हम long vowels देखेंगे, group 4 and 5 देखेंगे, and if time permits we'll see group 6 as well. Okay? Any doubts?